अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं दही की कड़ी और मसाला वड़ा। मसाला वड़ा बाय इटसेल्फ भी खा सकते हैं और दही की कड़ी में सोक करके भी जस्ट बिफोर सर्विंग। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा मेथी, 1 ऑनियन स्लाइस्ड, कोरिएंडर लीव्स, 4 ग्रीन चिलीज, सीजनिंग के लिए करी लीव्स, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, हाफ टी स्पून ज़ीरा, सॉल्ट, 1 कप स्लाइटली सार कर्ड एंड 2 टेबलस्पून चने का। मसाला वड़ा बनाने के लिए 1 कप चना दाल सोक्ड इन वाटर फॉर हाफ एन आवर, 2 ऑनियंस चॉप्ड, 4 ग्रीन चिलीज चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स, हाफ टी स्पून ईच ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, सॉल्ट एंड डिल लीव्स। सुई की भाजी अगर है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं थे तो आई कुडंट ऐड। टेक अ पैन, add a cup of curd and to this add 2 tablespoons of chane ka atta, chickpea flour and beat it to a fluffy consistency। अच्छे से मिक्स हो जाए बस। You should beat both together very well. There should not be any lumps. Now add a glass of water and beat again. Now to this add all the ingredients: coriander leaves, onions, chili powder, green chilies, turmeric powder. Do not add the salt at this time. Beat well. Now keep it over flame medium and cook till fat breaks away from the yogurt. This will take around 10 minutes and this is the way it will look. Now it's ready for seasoning. Add a tablespoon of oil. Once the oil is hot, add the zeera and the mustard seeds. Let it splutter. Once it splutters, add the curry leaves and the red chilli. Mix and pour the seasoning over the curd, dahi ki kadhi. Now you can add the salt. Switch off the flame. Keep it covered. Let's make the vadas. In a separate plate, take a tablespoon of soaked chana dal, mix it with 1 or 2 tablespoons of chopped onions and keep it aside to mix it with the ground masala later. If you're using dill leaves, chop them and keep them aside. Grind the remaining ingredients. Remove to a plate. Now add the ingredients that you have kept aside, including the dill leaves. I didn't have, so I haven't added, but it is very tasty. The masala vadas come out very tasty if you add the dill leaves. The sui ki bhaji. Mix well. Take small lemon-sized balls and flatten them. You can apply oil to your palms. You can even make and store them in the freezer to be used later. Heat oil in a saucepan. Don't let it become smoky hot. Keep it on medium flame, otherwise it will be raw inside. Turn over slowly and cook the other side. Once the vadas are done, remove to a tissue-lined plate and keep them aside. You can have the masala vadas with your evening tea or have it as an accompaniment with dahi ki kadhi. You can even soak the vadas in your dahi ki kadhi just before serving. Do like, share and subscribe and don't forget to comment. Thank you for watching.